Hello friends and welcome to Bullet Points in Forensic Medicine Part 3. दो एपिसोड हम पहले कर चुके हैं. दो एपिसोड में वी हैव शेयर्ड विद यू सम क्रिस्प वेरी प्रिसाइज बुलेट पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ऐसे टॉपिक्स में से फोरेंसिक मेडिसिन के, राइट. This series covers information for all those students who are either appearing for an ICT examination or NEET PG examination or FMGE examination. Information इसमें सबके लिए है. आइए आज देखते हैं फोरेंसिक मेडिसिन बुलेट पॉइंट्स में हम क्या देखने वाले हैं. सो लेट्स सी टू क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें इंसाइट देंगे कि हम आज किस तरीके के बुलेट पॉइंट्स देख रहे हैं. Right? The first question is, a child has eaten something from roadside while going to play. Right? He has pain abdomen and says is unable to pass urine. इस क्वेश्चन के ना इतनी लाइंस पढ़ के आपको ऑलमोस्ट पॉइजनिंग का आइडिया लग गया होगा. तो द फर्स्ट थिंग इज कि जब आप ये देखोगे तो मुझे मैसेज में ये भी लिख के बताना कैप्शंस में कि कौन सी पॉइजनिंग है ये. Okay, his body temperature is high and is not recognizing his own mother. Okay, so these are very important clinchers so that one should be able to identify कि poisoning कौन सी है. What would be the antidote? The actual question is not about poisoning. The actual question is कि antidote क्या रहेगा, right? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. A patient has been brought to emergency with gross alcohol intoxication. On further inquiry, it is learned that he has consumed large amounts of methanol. Right? तो उसने spurious liquor, hooch liquor पी है. What would be given to this patient to neutralize the poison? Again यहाँ पर भी यही पूछा हुआ है कि न्यूट्रलाइजेशन के लिए एंटीडोट क्या देना पड़ेगा. इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं जहां पर हमारे को एक सिनेरियो देकर के कोई एंटीडोट पूछा जाता है. सो आइए बुलेट पॉइंट्स नंबर 3 में व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एंटीडोट्स. राइट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एंटीडोट्स ऑफ सर्टेन कॉमन poisoning situations. Right, this is the list. So we start with dhatura क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे that is a question of dhatura poisoning. Right, the antidote is physostigmine. Right, methanol or ethylene glycol. The antidote is ethanol or fomepizole can also be used. Right, acetaminophen and acetylcysteine एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है. सो रिमेंबर दिस इज समथिंग विच इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन many times. Then organophosphorus और कार्बोमेट्स के लिए एंटीडोट होती है atropine which is the specific antidote, but another group of drugs which enjoys the antidotal status are oxime reactivators, pralidoxim, right, और diacetyl monoamine. But ये जो प्राइडॉक्सिम है ये कहाँ यूज करनी होती है? वी कैन ओनली यूज दिस इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, नॉट इन कार्बोमेट पॉइजनिंग. राइट, इन कार्बोमेट पॉइजनिंग देयर इज रिवर्सल. राइट, द कार्बोमेट इज गोइंग टू बाइंड टू anticholinesterases only for certain period of time, that is about 24 hours. They themselves leave the enzyme, so there is enzyme reversal. Enzyme starts to do its action, and that is why we don't need monoamine, the oxime reactivators like diacetyl monoamine or pralidoxim. Opioids के लिए naloxone होता है. Ophitoxemia is snake venom poisoning. Snake venom poisoning is called as ophitoxemia. इसके लिए क्या होगा? एंटी स्नेक वेनम. पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम इज बेटर, और एंटी स्नेक वेनम. देन बेंजोडाइजेपिन्स के लिए फ्लूमाजेनिल. कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग के लिए हाइपरबारिक ऑक्सीजन. साइनाइड पॉइजनिंग के लिए अमाइल नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट and sodium thiosulfate. Again, something which is asked in examination in different forms. Right, most commonly ऐसा भी पूछा जाता है कि what is not used as
antidotal in the antidotal kit in cyanide poisoning. So they may give you 4 options, out of which one is wrong. So 3 things that should be present in that kit is amyl nitrite, sodium nitrate, and sodium thiosulfate. Arsenic poisoning, again very important, BAL or dimercaprol, British anti-leucite, is very specific for arsenic. Okay, but DMSA is better. Remember, if somebody asks you that a patient is of arsenic poisoning is with you, and the patient can take substance orally, what would you give? DMSA is better because it can be given oral. British anti-leucide cannot be given oral. It has to be reconstituted in Arachis oil, so it has to be given as a deep intramuscular injection. So DMSA is a better choice, right? Lead, calcium, EDTA, copper, penicillamine, and iron, desferoxamine. Although a very simple option, desferoxamine for iron, but again in context of pediatrics, blood transfusions in cases of thalassemia and many other pediatric disorders, desferoxamine is very commonly used in those wards for preventing the overdose of iron in those patients. And so आज की डेट में क्लिनिकल सेटिंग्स के जब क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के ऑप्शंस अभी भी पूछे जाते हैं. वेरी सिंपल. सो आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड फॉर यू कौन से ऐसे एंटीडोट्स हैं जो डिफरेंट टाइम पे पूछे जाते हैं. रिमेंबर, धतूरा भी एग्जामिनेशंस में बहुत कॉमनली रिपीट होता है. धतूरा रिपीट होता है, मिथेनॉल का एंटीडोट रिपीट होता है, एस्टामिनोफेन एंटीडोट्स रिपीट होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस के काफ़ी कॉमनली पूछे जाते हैं, स्नेक वेनम काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है. साइनाइड के बारे में जो मैंने साइनाइड किट दैट वी टॉक्ड अबाउट, दैट इज आज इन द एग्जामिनेशन. आर्सेनिक, ब्रिटिश एंटी-ल्यूकोसाइड एंड आयरन, these are some things which have been found repeating in the examination again and again, right? Hope this helps you. I'll see you in the next section in bullet points number 4 of forensic medicine. Keep studying hard. Bye.